Chris, is that a weed? No, this is a crayon. Call the police! 911, what's your emergency? competitive survival वो है वैसे। अच्छा तुम अपनी sanity lose करते जाओगे क्योंकि हमारी midnight हो रही है। Yes. अच्छा तो you could start us off, I guess. तुम करो start तुम्हारा episode है। Hello and welcome again to the Q&A podcast. Today I am here with You, hello everyone. and I am A, and always this time around we actually don't have हमारे पास कोई एक pop culture story है नहीं इसको tie in करने के लिए इस episode को। तो हाँ I guess more or less जो drama ensuing है इस पूरे episode के दौरान and जो story है unfold होने वाली है आप लोगों के सामने यही I guess more or less तुम्हारे pop culture reference के तौर पर ही माना जाएगा। मगर हम लोग आज जो है essentially तौर पर पाकिस्तान और ग्लोबल हम लोग ड्रग पॉलिसी को essentially तौर पर एक हिस्टोरिक और रेट्रोस्पेक्टिव लेंस के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। मैं पिछले कोई हफ्ते से पागल हुआ हूँ इसको अनवाइंड करते हुए मैं काफी excited हूँ देखने के लिए तुम्हें क्या मिला इस पूरे process में। हाँ लाइक क्या कहते हैं बात ये कि एंड में जाके I will always preface this before any like mental health topic or drug abuse topic or anything like this कि if you are facing any problems with addiction, if you are facing any problems with respect to drug use जो तुम खुद से resolve नहीं कर सक रहे, it is always in your best interest and in the best interest of people around you कि तुम help जाके सीख करो, उसका इलाज करवाओ and आगे से जाके स्पेशली तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे पाकिस्तान में तुम्हारा लीगली तौर पर कवर्ड है कि फर्स्ट टाइम रिहैब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड है। अच्छा This is what I found out, but I am I wonder in practice कितना होगा। हाँ in It's practice really उसका good. मुझे zero idea है कि अगर है in practice या नहीं, but this is what I've read in laws. It is codified into the law. You can do this. तो हाँ ये like उसका benefit और फायदा उठाओ। ये मैं खुद भी आए को learn किया। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे इस बात का पता नहीं था। तो क्यों हम लोग कुछ थोड़ा सा पर्सनल पर्सपेक्टिव से शुरू करें या फिर हम लोग सीधा बस डीप डाइव हाँ, करें इसके अंदर? अगर हम disclaimers दे ही रहे हैं तो मैं ड्रग्स की फेवर में बात करूंगा पर लेट मी प्रेफेस इट विद के 25 साल की उम्र के बाद करे जो जिसने भी ड्रग्स करने हैं। हाँ वैसे मैं भी सिमिलर वेन के अंदर ही हूँ कि लाइक यू नो इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज लाइक सारा कुछ इन देखो, मॉडरेशन एंड में आके एग्जैक्टली 18-20 साल तक मैच्योर हो जाते हो एडल्ट हो जाते हो लेकिन दिमाग अपना पूरी तरह डेवलप होने दो इससे पहले कि उसे फक अप करो। लाइक मैं फुली भी मैं मोर लेस कह सकता हूँ कि लाइक फॉर मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस द लेटर यू स्टार्ट देम द बेटर ऑफ यू आर एंड स्पेशली तौर पर अगर लीगलाइज करना भी है तो आई गेस अबव द एज ऑफ 24 या 23 या जब दिमाग थोड़ा सेटल कर जाता है लाइक हाँ, 18 इज लाइक अ वे टू आर्बिट्रेरी ऑफ एन एज उसके लिए सही बात है। तो उस लिहाज Better से late. हाँ हाँ तो वी कैन कीप इट शॉर्ट अगर हमने अपनी पर्सनल बात करनी है क्योंकि आई फील लाइक लोडेड टॉपिक है थोड़ा और तुम्हारे पास बोलने को काफ़ी होगा। दैट्स काइंड ऑफ ट्रू मेरे पास बोलने को वैसे बहुत है अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको घंटे के पॉडकास्ट में समराइज कर सकूंगा मगर कोशिश करूंगा अपने तरफ से पूरी तौर पर कि मैं करूँ आई थिंक आई स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ अस व्हेन आई से कि हमारा ड्रग्स और ड्रग लॉस से पहला इंट्रोडक्शन ब्रेकिंग बैड था। उससे पहले हमने कभी सीरियस नहीं लिया था ना किसी ड्रग डीलर को कूल समझा था। वैसे दैट्स वेरी ट्रू हाँ I mean Breaking Bad was like such a cultural phenomena and such a global phenomena कि like I don't think there's anyone on the face of this planet who has not seen Breaking Bad. If they haven't seen Breaking Exactly. Bad, stop this podcast right now. Go watch Breaking Bad. फिर वापस आना. सबने देखा था मेरी अम्मी ने भी देखा था। Exactly, and it was actually like a really good like take on how the drug trafficking industry and the drug production industry essentially thought पर like makes a victim out of the people who are involved in it. And आगे जाके like you see how क्या कहते हैं the character of Walter White changes throughout the story of Breaking Bad उस तरह से। हाँ वो हर चीज़ से टैकल कर रहे थे ड्रग यूज से भी कर रहे थे वॉल्टर की अपनी मैस्कुलिनिटी और उसके इश्यूज के साथ भी साथ लगे हुए थे। आई थिंक हमने उस टाइम पे भी कुछ गलत लेसन्स लिए थे उससे जो कि इन रेट्रोस्पेक्ट स्काइलर को जितना बिच कहा जाता था वो बनता नहीं था। Exactly, वैसे ये भी मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ इस बात के साथ कि like
हम लोग ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने लाइक देखा था उसको एंड देन वो बहुत अनोइंग लग रही थी बट लाइक इफ यू टेक इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेकिंग बैड इफ योर husband was a drug dealer I think you would have very similar reactions to her हाँ, and क्या कहते हैं क्या करोगे आप? हाँ बाकी तो- क्या कहते हैं हम लोग अपनी एडिक्शन के बारे में हाँ वैसे ऑन द पॉइंट ऑफ एडिक्शन वेट करो और अपनी एडिक्शन की बात करने से पहले ऑन द पॉइंट ऑफ एडिक्शन इट इज़ वन पॉइंट जो मैं हमेशा नोट करता हूँ एंड दिस इज़ वन पॉइंट दैट I've changed very much throughout क्या कहते हैं my life everyone has a vice of some form है ना like be it like क्या कहते हैं like a social media addiction be it like a gaming addiction be it like a क्या कहते हैं like a TV show addiction or like any other kind of vice or like some like you could even be like cheating on your like partner or like क्या कहते हैं being misogynistic or like क्या कहते हैं other than like you can also be other vices like that in that vein हाँ, it's just that everyone has a vice everyone has shortcomings everyone has flaws but बात ये है कि कुछ लोगों के flaws जो हैं ज़्यादा evident होते हैं versus like other people's flaws they're more like visible essentially तौर पर to say तो उस रिस्पेक्ट के अंदर जो है ना हम लोग को जज नहीं करना चाहिए कि जिन लोगों के थोड़े ज़्यादा visible vices हैं in comparison to people who have more hidden vices जो आमतौर पे नहीं नज़र आते हैं तो उस वजह से एक और- चैरिटेबिलिटी देनी चाहिए लोगों को और वी होप कि आप हमें भी देंगे एज वी शेयर आवर्स. Yeah, so we could just gatekeep this to the end of the podcast, so then people are forced to listen to the end of the podcast. I like that. That's a very nice idea. We could even just put this behind the Patreon wall, वैसे. That'd be fun. Ooh, even So then better. you can like subscribe to the Patreon and then find out more deeper cuts into our lives. But हाँ, क्या कहते हैं हम? इतने सॉसी हैं नहीं जितने हम साउंड करा रहे हैं पर you know it's something. तो हाँ, वापस आते हुए. Let's just try and hopefully get through what will be the most agonizing journey through drug laws in the past 100 and 250 years, I think, roughly. हाँ, So- क्योंकि हम इतनी ज्यादा रिसर्च और बातें सुनते हैं अमेरिकन ड्रग लॉज के ऊपर पर Like हम लोग अपने बारे के drug laws जो हैं, we have like very little exposure to how हाँ, our drug laws came into effect, किधर से आए, क्यों आए. You just kind of accept कि they're there. And वो किस वजह से वो इन्फोर्स किए जाते हैं वो हम लोग को more or less अथॉरिटी जो इन्फोर्स कर रही होती है उनसे ही बताया जाता है कि ये किस वजह से हाँ. हैं तो और लॉज से हटके इवन कल्चर उसके इर्द गिर्द जो होता है उसका भी हाँ. कोई एक्सपोजर नहीं होता until like आप कॉलेज जाते हो या हाई स्कूल में होते हो लेटर इयर्स में अपने स्कूल के तो आप काफी ब्लाइंड जा रहे होते हो उसके अंदर. Exactly. So like having a bit of like sense and bearings and this statement is like tumultuous like subject के अंदर I guess थोड़ा सा beneficial है आखिर में जाके. So हाँ, we will हाँ. start the story and it begins 12,000 years ago in a planet far, far away. Okay, I'm joking. It starts in 1770 with the dissolution of the British East India Company. East India Company जो है वो essentially तौर पे bankrupt हो जाती है ना. Bankrupt होने के बाद जो है वो essentially तौर पर British Parliament से मांगती है कि like you know you have to take over this shit. हम लोग इसको और manage नहीं कर सकते. हम लोग bankrupt होने वाले हैं है ना. और इससे पहले ये इंडिया का सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए आप लोग कंट्रोल सीज कर लें. पार्लियामेंट जो है वो अग्री कर जाती है कहते थे कि सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लैंड्स है वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल के नीचे आ जाते हैं है ना. तो द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना वो काफ़ी लाइक यू कुड से कि वो कॉम गुजरते हैं. यू कैन हियर लाइक अ कपल ऑफ नेसेयर्स हियर एंड देयर इस तरह के लोग जो हैं वो लाइक आउटबर्स्ट्स आते हैं लोगों के स्पेशली हायर वाइट क्लास सोसाइटी के कि लाइक यू नो ड्रग यूज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है इंडिया के अंदर एंड स्पेशली तौर पर जो है वो वीड भंग गांजा और क्या कहते हैं चर्स जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है उसका इम्पैक्ट और साथ में क्राइम रेट उसके साथ डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं और 2-3 और चीज़ें इस तरह के कोरिलेशन दरमियान में डाल रहे हैं और ये मोर लेस हाई क्लास सोसाइटी जो है कंप्लेन कर रही है इस चीज़ के बारे में. और आई थिंक ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर फैमिन्स रेगुलर होती थी और हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक कोई अच्छी कंपनी कहीं से भी नहीं थी. उन्होंने वो इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन से जो है वो tens of millions of people died. हाँ tens of So- millions of people died with the ink of their blood essentially तौर पर like billions like not even billions trillions of dollars of resources and like क्या कहते हैं
लेबर सारा कुछ जो एक्सप्लॉइट किया गया इंडिया से और पिलेज किया गया इंडिया को, तो दे वो लाइक एक सेपरेट आई गेस टॉपिक है जो किसी और दिन आई गेस छेड़ा जाए, एंड हाउ द फैक्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लाइक द मोस्ट wealthiest company in ever in No, existence. I meant कि ड्रग यूज अगर प्रेवलेंट है भी, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे आधी आबादी आपकी स्टार्व कर रही है, मर रही है, तो हाँ, तो लाइक इन कॉन्टेक्स्ट वो Right. लाइक वो भी अभी उस पॉइंट पे अभी हम लोग आते हैं। तो ये कंप्लेंट्स जो है ना काफ़ी देर तक लाइक वो रूमिनेट करते रहे विद इन इंडिया, है ना। फर्स्ट इन अराउंड 1798 है ना, एक वो बोर्ड बैठता है ना, इट सेज के वी नीड टू फिगर आउट के हाउ वी गेट दिस ड्रग प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल, है ना। एंड दे ऑल अग्री Mhm. के वी शुड curtail लाइक ओपियम और दूसरी चीज़ें, मगर भंग और साथ में वीड और marijuana के जो लाइक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना, उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको curtail किया ना तो इसकी बैकलैश बहुत ज़्यादा होनी है। लाइक द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एसेंशियली तौर पे बैठी थी इसके पीछे, दे ऑल्सो इवन अग्रीड के लाइक यू नो इसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा हम लोग ने अगर किया, क्योंकि वो एसेंशियली तौर पर हिंदुओं की कल्चरल राइट्स के साथ बहुत डीपली एसोसिएटेड है, सिखों की कल्चरल राइट्स के साथ बहुत डीपली एसोसिएटेड है, एंड लोअर क्लास एसेंशियली तौर पर वो जो है इंडियंस जो है वो बहुत ओपनली कंज्यूम करते हैं, साथ में मुस्लिम सूफीज भी जो है उनके वो लाइक उनके वो कल्चरली तौर पर रेलेवेंट था। इट वाज रिलीजियसली इंपॉर्टेंट टू द थ्री ग्रुप्स दैट वर रूलिंग ओवर, एंड आगे से इट वाज टू मच ऑफ अ हैसल टू एसेंशियली तौर पर डील विद इट, है ना। अभी के लिए उन्होंने टेंटेटिवली तौर पर उसको लाइक डील उन्होंने कहा कि लाइक यू नो हश हश कर दिया, प्रॉब्लम को साइड पे हटा दिया। Eventually these reports of marijuana menace essentially तौर पर जो उसको क्लेम किया गया था उस वक्त, वो रीच करती है इंग्लैंड पहुंच के, जो जब ये आए ना रिपोर्ट्स के लाइक यू नो इस तरह लोग जो है ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं भांग पीने की वजह से, मेंटल इलनेस को जो है इंक्रीज कर रहा है, क्रिमिनल एक्शन जो है वो ऑन द राइज है, मगर दीज कैन ऑल बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर थिंग्स। आई मीन उस वक्त मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इंसैनिटी वगैरह जो है वो। वायलेंस को कैसे इंक्रीज कर रही है? हाँ, भांग, marijuana और वीड वायलेंस को कैसे इंक्रीज कर रही है? they were just like क्या कहते हैं reports essentially तौर पर in relation के like you know the financial secretary of the government of India added his voice to the growing condemnation of cannabis. Every lunatic asylum Uh-huh. report is full of instances of insanity and crime due to ganja. This is what he essentially तौर पर said. So like Okay, and I surprising. can imagine it has nothing to do with how the हाँ, British were ruling India. exactly. I mean, they had much bigger problems वहाँ पे dealing with. कि, like, if you have famine, obviously people are going to steal. If you have like क्या कहते हैं poor economic outcomes for everyone involved, so obviously people are going to like क्या कहते हैं lash out and do like क्या कहते हैं more like violent actions towards each other and towards other people, and especially towards the rich white class जो essentially तौर पर बोल रही थी उस वक्त। और अगर हम 1798 की बात कर रहे हैं तो ये 1798 है? Yeah, this was 1798 this जिसमें is वो शुरू हुआ है। This is pre-war of independence. हाँ, this is pre-war of independence, and then eventually this whole thing settles down, है ना। हम लोग उसको टारगेट करते हैं इस तरह से कि हम लोग टैक्सेस essentially तौर पे लगा देते हैं उसके ऊपर, and then we'll just earn more money off the trade, क्योंकि at the same time British were also exporting opium at very low rates made in Bangladesh to the Chinese, who were buying it at much higher rates. So they had an economic incentive to essentially तौर पर maintain both tobacco, opium and marijuana trades. उन्होंने बस कहा कि essentially तौर पर इनको हम लोग टैक्स कर देते हैं heavily तौर पर, chill करते हैं, things move on, है ना। 1871 आ जाता है, almost 100 years have passed, well like not 100 years, like almost 100 years roughly, like 70-80 years pass, है ना। इस यही उनका वो more or less stance है इस situation के ऊपर, and then फिर से जो है ना वो क्या कहते हैं वो वाइट लोग जो है फ्रीक आउट करना शुरू हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं कैनबिस के ऊपर कह रहे होते हैं कि लाइक यू नो क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं, इंसैनिटी है, ऑल द सेम लाइक सॉन्ग एंड डांस जो पहले कोई 50 साल पहले हुआ था। ब्रिटिशर्स जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस लेते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि हम लोग ना एक कमीशन को बैठाते हैं, है ना, वो पता करेगा कि फाइनली वंस एंड फॉर ऑल कि अगर कैनबिस जो है ना कैनबिस का कंजम्पशन इन द सब कॉन्टिनेंट वो अगर डायरेक्टली लिंक्ड है टू ए क्रिमिनलिटी, बी क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, और सी क्या कहते हैं उसका अगर आउटराइट बैन किया जा सकता है या नहीं। दिस वाज जो इनको उस वक्त पता नहीं था, मगर अब उनको लाइक अब आके रेट्रोस्पेक्टिवली पता चलता है
This was considered to be the first and probably the most largest and thorough, essentially, तौर पर commission to ever be launched into drug use and its impacts on society. है ना? क्योंकि like although this was like probably the most like single-handedly thorough investigation ever done, इसके जो outcomes essentially तौर पर जो है ना वो ब्रिटिशर्स के इतने खास फेवर में नहीं आता जो उनके claims वगैरह थे. So they just क्या आउटकम आती है इस कमीशन की? इस कमीशन की आउटकम जो है ना essentially तौर पर but the effects of the drug on essentially तौर पर society as a whole है ना ये हाँ. उन्होंने जो पता किया वेट करो 2 सेकंड. हाँ, the conclusions of having examined the evidence the commission concluded essentially तौर पर उन्होंने like कोई 1001 लोगों को इकट्ठा किया हर प्रोविंस में से उनके आपस में क्वेश्चनिंग की सारा कुछ किया उन्होंने like पता करने की कोशिश की कि क्या impacts थे. सही. So essentially, number one, moderate use of cannabis drugs has no appreciable physical effects on the body. As with all drugs, excessive use could weaken the body and render it more susceptible to disease. Such circumstances were not peculiar to cannabis. Moderate use of cannabis drugs had no adverse effects on the brain, except possibly for individuals predisposed to act abnormally. Excessive use, on the other hand, could lead to mental instability and ultimately insanity with individuals predisposed to hereditary mental disorders. Moderate use of cannabis drugs had no adverse influence on morality. Excessive usage, however, could result in moral degradation. Although in certain rare cases, cannabis intoxication could result in violence, but such cases were far and few between, and they summarily fell apart upon closer scrutiny. Interesting. ये 3 लाइनें अब तुम सोचो 2 मिनट के लिए. Like हम लोग अब आजकल सोचते हैं कि like you know कैनवस यूज जो है वो एसेंशियली तौर पर वो इतना खास वो रिलेशन नहीं है टुवर्ड्स वन वायलेंस एंड टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ एसेंशियली तौर पर है ना अदर देन इफ यू हैव अ प्रीडिस्पोज कंडीशन ये मैं डॉक्टर होते हुए कह रहा हूँ कि इफ यू हैव अ प्रीडिस्पोज कंडीशन टू क्या कहते हैं लाइक प्रीडिस्पोज कंडीशन इन योर फैमिली और हिस्ट्री तो इट कोड एसेंशियली तौर पर एग्रीवेट दैट है ना बट इन पीपल हु डू नॉट हैव अ हिस्ट्री के एपिसोड्स हो जाते हैं. हाँ उनको साइकोसिस के एपिसोड्स ट्रिगर हो सकते हैं उससे. तो वो like this is like literally in the 1800s or like the 1700s जब ये बात हो रही है and उस वक्त जो है mental health disorders और इस तरह टाइप चीज़ों का and especially the fact कि hereditary mental disorders का mention किया गया है इस कमीशन के अंदर is absolutely insane जो मुझे absolutely mind blown हुआ था. वही ना, it's like something you would read these days. हाँ ये आजकल के ज़माने में जो है वो like क्या कहते हैं बात की जाती है but ultimately वापस आते हुए ये कमीशन को essentially तौर पर they read the commission they didn't like it that much है ना and it was kind of brushed off to the side कि उन्होंने कहा कि like you know ये हमें फजूल में बकवास कर रहे हैं और उनको essentially तौर पर टैक्स का बस उन्होंने मसला किया कि उसको हाईली टैक्स किया उसको फिर से and then साथ में जो है कैनबिस और सॉरी वो ओपियम ट्रेड को essentially तौर पर और प्रमोट किया. In conclusion, ये जो commission था उन्होंने बस कहा although चरस and ganja were potentially harmful if taken in excess, the commission felt that suppression of drugs of these was also unadvisable. So they just more or less continued in like similar veins and then ये जो findings थी ये कभी किसी के साथ share नहीं की अपनी further drug policy जो भी कुछ बनाएंगे उसके अंदर कोई influence नहीं हुआ. Is it a bit of a nothing burger उस लिहाज से I don't know like इतनी कोई like revealing study हुई है conduct की गई but उसका कोई impact नहीं रहा तो उस लिहाज से मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है. मतलब वही है ना, you have studies लेकिन वो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं करता तो you're like okay we'll just put this to the side अभी के लिए. जैसे oil companies climate change के साथ थी. Exactly, it's more or less in a similar vein. Like क्या कहते हैं British were essentially thought operating in the same way as a corporation would work. Like वो EIC वाले situation को बस extend कर रहे थे बस वो government का नाम साथ में ठापा दिया हुआ था और colonialism का नाम दे दिया उसको. और हम लोग क्या कहते हैं आपस में हम लोग ने पहले 2-3 बार मेंशन कर चुके हैं कि ब्रिटिश जो हैं वो essentially तौर पर ओपियम को प्रोवाइड कर रहे थे टू चाइना है ना. So this is where your opium wars things turns up है ना. Essentially तौर पर throughout the 18th century है ना and during this time है ना British essentially तौर पर fought 2 wars with China. उन लोगों को जो है ना they were essentially तौर पर providing free cut heroin to smugglers essentially तौर पर and those smugglers were then importing the heroin into China and spreading it amongst the masses which led to debilitating and क्या कहते हैं hurting their economy etc etc जो कि वो unregulated था for the most part.
फर्स्ट एंड सेकंड ओपियम वॉर्स essentially तौर पर फाइट की गई थी. These were more or less over free trade and क्या कहते हैं like क्या कहते हैं the freedom of trade जो essentially तौर पर उनको allow नहीं किया जा रहा था. हाँ, क्योंकि चाइना ने इन्हें लिमिट किया हुआ था ना टू सम कोस्टल सिटीज, उधर ट्रेडिंग रीजन्स थे जहाँ पे ये अपनी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह सेटअप कर सकते थे, बट दे couldn't go into the mainland. So this is how they got back at them basically. this was like their essentially तौर पर backstab in the back के like अगर आप हम लोग को यहाँ पे ट्रेड और एक्सटेंड करने नहीं दोगे तो हम लोग ओपियम कोवर्टली हम लोग बेचते रहेंगे और तुम लोग की वो ठप कर देंगे तुम्हारे लाइक इंटरनली मॉरली डिग्रेड कर देंगे तुम्हारे लोगों को. तो चाइना हैड ऑब्वियस रीजंस टू लाइक क्या कहते हैं बी लाइक outraged at this. Following the opium wars, है ना, essentially तौर पे Britain had gone to war with China twice in the past century, है ना, and trying to avoid all of this, है ना, in the past history जो पिछले 100 साल में हुआ था. First International Opium Convention carry out होता है. This was essentially तौर पर carried out in 1912. We have skipped a couple of like years in between this, क्योंकि वो पिछली जो study जो carry out हुई थी वो carry out हुई थी in like 1892 इस तरह कुछ, तो like late 1800s में carry out हुई थी. तो 20 years बाद उसके, हाँ कोई 20 एक साल बाद जो है ना वो क्या कहते हैं उन्होंने फर्स्ट क्या कहते हैं ओपियम कन्वेंशन को होल्ड किया, जिसके अंदर उन्होंने एसेंशियली तौर पे कहा कि ट्रेडिंग ओपियम इज बैड, वी शुड आल्सो क्या कहते हैं लाइक आउटलॉ कोकेन, वी शुड आल्सो आउटलॉ लाइक अदर हार्ड ड्रग्स. आई एम श्योर उस पॉइंट तक इफेक्ट्स नजर आने लग गए होंगे ना, क्योंकि अगर आप इन मैस पंप कर रहे हो एक मुल्क के अंदर एग्जैक्टली उसके इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि लाइक यू नो वी कैंट लेट दिस गो रैम्पेंट पर से. हाँ, और इनका अपना भी था ना एक वाइसरॉय बंगाल का, आई थिंक, या who was an opium addict and then he died from an overdose later in life. हाँ इस तरह कुछ था, मगर मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है उसका. इधर मेरा दिमाग हाथ फ्राई हुआ है. We're gonna make it through this. Yes. 1912 के अंदर जो है ना, this is the first large scale international law that is passed to prohibit hard drugs, है ना. So who participated in this conference? Everyone participated in this conference. Germany, United States, China, France, United Kingdom, Italy, Japan, Netherlands, Persia, Portugal, Russia, Siam, and also India joined in on this, है ना. They essentially said they did not want to trade opium, cocoa plant जो essentially तौर पे cocaine के लिए है, and we reach a bit of an insidious point यहाँ पे. In this essentially तौर पर in the American Commission जो वहाँ पे भेजा गया था, है ना, sorry, Hamilton Wright US Chief Delegate जो delegate था, and साथ में जो है एक कैलिफोर्निया का pharmacist था. California pharmacist essentially तौर पर Henry J. Finger turned up to be like essentially तौर पर the क्या कहते हैं the medical end of this spectrum, है ना, to like provide advising on that end. But thing is, he was an upscale kind of doctor, है ना, upscale kind of pharmacist, and he was a bit of a racist उस लिहाज से. So he essentially तौर पर क्या कहते हैं Hamilton Wright essentially तौर पर wanted to outlaw cannabis and क्या कहते हैं साथ में outlaw cannabis, है ना. And बात ये है कि since there was like a negative connotation, especially तौर पर with respect to minority use of cannabis, है ना, तो उस लिहाज से जो है ना वो Hamilton Wright and Henry J. Finger जो है वो essentially तौर पर Hamilton Wright खुद भी ये push करना चाह रहे थे, मगर Henry J. Finger at that moment stood up and in this first opium conference and he begged essentially तौर पर the committee जो वहाँ पे इकट्ठी हुई थी कि cannabis भी उस list पे लगाई जाए, है ना. उसके खुद अपने कॉम्स थे marijuana के बारे में, मगर like the reason Henry J. Finger essentially तौर पर wanted to outlaw cannabis was because of the large influx of Hindus who were introducing whites to their habit. So wow, हाँ, तो like there is a very like क्या कहते हैं racist connotation attached to this कि वो खुद भी क्यों outlaw कराना चाह रहा था. But this was the first major legislation जो essentially तौर पे pass हुई थी on drugs. So every country that participated, and also India participated in this, had to outlaw opium, cocaine, and also marijuana. But India as an independent state तो नहीं थी ना, वो तो as a British India colony as a British colony participate कर रही थी, but like they also had to follow suit उस लिहाज से. So in the wake of this, essentially तौर पर you end up with the Dangerous Drug Act of 1930. This was like a drug act जो essentially तौर पर Geneva, हाँ, this
क्या कहते हैं, ये जो essentially तौर पर marijuana opium ये जो conferences carry out हुई थी, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, this is actually added into the Geneva Convention, which is actually insane. I did not know कि this Geneva Convention का भी part था. So either way, conforming to the Geneva Conventions, India also had to pass a Dangerous Drug Act, जिसके अंदर they outlawed the production of opium, Indian hemp, and the cocoa leaf. Either way, this became your standard drug act, जो apparently पाकिस्तान की independence तक more or less यही hold up हुआ था. ठीक है. पाकिस्तान की independence के साथ eventually story moves on forward, है ना? Eventually World War One happens, World War Two happens, like shit hits the fan, है ना? बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो like दुनिया जो है उल्ट पुल्ट हुई हुई है. Eventually जो हाँ. है ना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो है gains independence, है ना? सही है. Now we enter the section जो essentially तौर पर थोड़ा सा deviate कर जाता है from the rest of global policy and it moves more towards Pakistan policy. मगर वो global policy फिर भी बहुत ज़्यादा influence hold करता है. अच्छा, मेरा इससे पहले कि तुम उधर जो क्वेश्चन है, हाँ. इस सारे टाइम के अंदर अल्कोहल जो है वो Yeah, that's क्या legalized. स्टेटस एंजॉय करती थी? That's legalized. हाँ, that's completely legalized. उसका कोई चल सीन है. It's just के सही है. with increasing taxes on marijuana, है ना, eventually तौर पर it became too expensive to buy. So a lot of people just transitioned to like drinking alcohol. So like alcohol at the time was not seen as like a societal ill जो ये बाकी सारी drugs enjoy करती हैं. हम्म. Now we enter post partition 1945 के आसपास, well 47 में हम लोग हुए ना, हाँ 1947 के आसपास. We entered 1947, Pakistan has regained independence, है ना? And आगे से जो है ना, ओपियम ना, अब हम लोग मोस्टली कैनबिस और ओपियम के साथ डील कर रहे हैं, जो कि कोकेन जो है ना essentially तौर पर इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल पाकिस्तान के अंदर, है ना? एंड मोस्ट ड्रग लॉज एंड मोस्ट यूज essentially तौर पर जो है ना इस, और ड्रग ट्रेड जो है वो इन दोनों के मोर लेस बहुत क्लोजली बाउंड है. आजकल के ज़माने में भी इसके सिमिलर लाइक एकोज फील किए जाते हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स और साथ में कोकेन वगैरह इतना खास अवेलेबल नहीं होता यहाँ पे. बट दैट्स स्लोली, वेरी स्लोली ट्रेडिंग, वो चेंजिंग, वो बाद में जाके हम लोग एड्रेस करेंगे. Okay. So in the essentially तौर पे we come to the mid 1950s. Mid 1950s के अंदर जो है ना, अफगानिस्तान and Pakistan are essentially तौर पर the largest producers of heroin and opium and heroin in the world, है ना? सही है. Afghanistan at the time was obviously like क्या कहते हैं, very conducive to this kind of production, है ना? क्योंकि I mean वहाँ पे बहुत उनके like बहुत history के अंदर available है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ओपियम उगाई जाती है, मगर that was just culture carrying on. तो 50s के अंदर जो है वो कल्चर थोड़ा सा पाकिस्तान के भी इधर स्प्रेड हो जाता है. तो essentially तौर पर ईरान के अंदर बैन जब eventually हुआ, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान took up the thing for producing opium. Now we enter क्या कहते हैं in mid 1950s essentially तौर पे ये सीन चल रहा था. And where was all of this opium जो यहाँ पे generate हो रहा था, वो जा किधर रहा था? वो essentially तौर पर Western Europe को जा रहा था और North America को जा रहा था mid 1970s तक. From the 1950s to the 1970s, there's essentially तौर पर there is a drug, like we have drug laws जो essentially तौर पर Dangerous Drug Act cover कर रही है. But बात ये कि वो enforce नहीं किए जा रहे थे इतने खास तौर पर. So we were just kind of letting this run free reign. और हम लोग के यहाँ पे illegal drug trade चल रहा था जो अफगानिस्तान के अंदर भी चल रहा था. हाँ, I guess with the porous border और हाँ, porous border की वजह से एक स्टेट जो हाँ बहुत स्ट्रांगली इन्फोर्स नहीं करा सकती हर जगह अपने लॉज. स्पेशली तौर पे वो बहुत tumultuous पीरियड था ना फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वो हम लोग के बहुत जल्दी बैक टू बैक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट्स वगैरह चेंज हो रहे थे, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी. तो बिकॉज ऑफ दैट, इन साथ में वी वर ऑल्सो फाइटिंग अ फकिंग वॉर. वहाँ पे क्या कहते हैं, 2 बार हम लोग ने जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, और साथ में जो है हम लोग ने ईस्ट वो कहता है बांग्लादेश को भी जो है हम लोग एसेंशियली तौर पर अंडर आवर थंब रखने की कोशिश कर रहे थे कि वो जुड़े रहे हमारे साथ वेस्ट पाकिस्तान जो है. तो political turmoil was much more on like क्या कहते हैं the higher priority that versus like some people just illicitly selling opium. हाँ, वो इतनी बड़ी डील नहीं होगी उस पॉइंट पे. Exactly. During the mid 50s to 70s ना एक फाइनल कन्वेंशन एसेंशियली तौर पर होल्ड करते हैं, है ना, ऑफ द ओपियम कॉन्फ्रेंस, है ना, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम लोग वो इस एसेंशियली तौर पर ट्रांसफरिंग ऑफ पावर फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस टू क्या कहते हैं यूएन एंड स्टफ. लाइक वो लीगल जार्गन है, जाने दो अभी के लिए. इस एसेंशियली तौर पर एक फाइनल मीटिंग होती है जिसके अंदर वो कॉडिफाई करते हैं सारे रूल्स को एंड सो ऑन. सही है. What happens in the 1970s in 80s in Afghanistan? तुम्हें पता है?
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ओवरथ्रो करती है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। yes, the Soviets फिर invade Afghanistan. Yes, क्या कहते हैं नहीं, पहले दे इंस्टॉल देयर गाय, देन इट हाँ डजंट वर्क आउट और उनकी आपस में ऑलमोस्ट सिविल वॉर शुरू हो जाती है, देन द सोवियत यूनियन इन्वेड्स टू होल्ड एग्जैक्टली, दैट उसको गवर्नमेंट टुगेदर। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हाँ करने के लिए। तो Soviet backed left wing government in Afghanistan fails to gain popular support, and the Soviets decide to invade, है ना? हाँ, हम लोग यहाँ पे अपने तरफ पाकिस्तान में क्या करते हैं? हमारा उस टाइम पे भुट्टो था 72 में, पाकिस्तान ब्रेक्स अप, फिर 72 में भुट्टो आता है, भुट्टो के बाद उसको ज़िया आता है, उसे मार देता है, पाकिस्तान उस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। Yes, we get involved with अफगानिस्तान। हम लोग भी जो है अमेरिका के imperialism को सपोर्ट करते हैं, और उसको कैसे सपोर्ट करते हैं हम लोग? एसेंशियली तौर पर हिकमत यार जो है ना, जो एसेंशियली तौर पर वहाँ का मेन मुजाहिदीन लीडर था उस वक्त, है ना, हम लोग उसको एसेंशियली तौर पर बहुत ढेर सारी फंडिंग देना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका फंडिंग हम लोग को देता है, हम लोग फंडिंग आगे से वो क्या कहते हैं उसको देते हैं, और हिकमत यार को हम लोग सिखाते हैं कि ओपियम जो वहाँ पे उग रहा है उसको जो है ना रिफाइन करना शुरू हो जाओ, और साथ में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाओ कि तुम लोग की अपनी फंडिंग जो है सिक्योर हो जाए, इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो सोवियत रेजिस्ट एसेंशियली तौर पर सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान। हम लोग सही एसेंशियली सही। हाँ, तो ये लाइक वी आर एसेंशियली तौर पर लाइक जो हम लोग का आजकल ओपियम क्राइसिस चल रहा है इन अफगानिस्तान, है ना, एंड जो पाकिस्तान में लीक ओवर हो रहा है, we are हाँ primarily responsible for this along with America for the most part. In very similar times, in the period of 1979 to 1989, America was also funding the drug trade in क्या कहते हैं in Latin America, साउथ अमेरिका, in हाँ South America, in Nicaragua, where they were funding the Contras to essentially like, हाँ produce heroin, fund themselves, and so they can resist the government that's been installed over there. उसको overthrow करने की tactic जो essentially और तौर पर इनकी प्लेबुक आई थिंक तब तक बन चुकी थी ना, बिकॉज दे वुड फंड दीज ग्रुप्स जो कि यूज करते थे गवर्नमेंट्स के खिलाफ टू ओवरथ्रो देम, लेकिन सिंस कांग्रेस के थ्रू आपको फंडिंग एक लिमिट तक मिलती है, वो उनकी ड्रग ट्रेड को फैसिलिटेट करते थे टू गेट मोर मनी exactly फॉर देम to do what exactly they're doing. because America doesn't want their stamp, their like rubber stamp at the bottom of their bills saying okay, we are paying off like these organizations to like overthrow these governments, है ना? At the same time, they're both funding all of these like क्या कहते हैं organizations जो essentially तौर पर अपने लिए जो है अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए हेरोइन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं और कोकेन अपने रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, एंड दे हैव लाइक अ ह्यूज, द CIA स्पेशली तौर पर हैज अ ह्यूज हैंड इन क्या कहते हैं फैसिलिटेटिंग बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस विद बोथ ऑफ दीज लाइक प्रोडक्शंस। That is just so fucked up. एंड इस वक्त के दौरान जो है ना एसेंशियली तौर पर पाकिस्तान लाइक अफगानिस्तान बिकम्स द हाईएस्ट support like highest producer of illegal opium in the entire world, है ना? Like वो ड्रग किंगपिन बन जाता है, वो ब्रेकिंग बैड वाला जो क्या कहते हैं वॉल्टर वाइट एसेंशियली तौर पर ओपियम का बन जाते हैं। सही है। इस पॉइंट पे जाके जो है आफ्टर लाइक क्या कहते हैं a while of this going on, है ना, like throughout the 50s थोड़ा सा like चिल होके जो है वो ओपियम एसेंशियली तौर पर एक्सपोर्ट हो रही होती है towards Europe and stuff, है ना? We end up with a study in the early 70s essentially तौर पर, है ना, एम्स्टरडैम सही। जो है वो एक वो क्या कहते हैं क्राइसिस फेस कर रहा होता है कि उनके जो हेरोइन यूजेज जो है ना वो इंक्रीज करती जा रही है स्लोली, बहुत लाइक क्या कहते हैं उनके वाइड स्प्रेड हो चुका होता है, स्पेशली तौर पर क्या कहते हैं जो उनके वो सेक्स वर्कर्स के अंदर जो है वो बहुत प्रेवलेंट हो जाता है, स्पेशली तौर पर STIs भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है सेक्स वर्कर्स के अंदर। सही सही। तो इस क्राइसिस को फिगर आउट करने के लिए जो है ना वो एसेंशियली तौर पर इनिशियली तौर पर वो क्या कहते हैं एक बैनिंग पॉलिसी लगा देते हैं, है ना, जिसमें वो कहते हैं कि लाइक वी आर गोइंग टू बैन क्या कहते हैं ऑल इलीगल ड्रग यूज, है ना, साथ में जो है हम लोग सही। क्लैंप डाउन करेंगे ऑन हाँ दे स्टॉप्ड सेलिंग ड्रग पैराफिनेलिया जो एसेंशियली तौर पर नीडल्स वगैरह जो हैं टू लाइक एट लाइक लोकल फार्मेसीज एंड स्टफ, है ना, ठीक है। कि ड्रग यूजर्स जो है एसेंशियली तौर पर इतनी इजीली एक्सेसिबल ना हो उनके पास। अ लोकल ग्रुप ऑफ पीपल एसेंशियली तौर पर, है ना, दे कम टुगेदर एंड दे रियलाइज के
providing people with safe sterilized needles essentially तौर पर है ना, वो essentially तौर हाँ पर वो HIV की वो like क्या कहते हैं वो ट्रांसमिशन रेट्स को, और B essentially तौर पर जो ड्रग यूजर्स खुद हैं उनके इन्फेक्शन रेट्स को और लाइक हेल्थ आउटकम्स जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो रियलाइज करते हैं कि having needles available at pharmacies at low rates was essentially तौर पर the one thing keeping these things in tap है ना, like in cap रखा था. हाँ So the medical junkie union है ना, or the junkie bond medical services social services essentially तौर पर for heroin users, वो essentially तौर ये पर क्या एक this is like a small group of people जो essentially तौर पर क्या कहते हैं local volunteers हैं है ना. They ओके essentially तौर पर came together and they realized कि without these like क्या कहते हैं low without these clean needles available to everyone है ना, we're going to have an outbreak of hepatitis B, HIV, AIDS, साथ में जो है और भी like क्या कहते हैं वो systemic sepsis इस तरह के outbreaks वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा likely हो जाएंगे. So they ठीक है start passing out these needles जो उन्होंने खुद खरीदी हुई हैं from हाँ in bulk वो producers और manufacturers से वो खरीद रहे होते थे, and they like they exchanged them out in the streets है ना. And क्या कहते हैं the government takes notice of this. Initially तौर पर they're like what the fuck is going on, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, हम लोग ने outlaw कर दिया हुआ है तो हम लोगों को ये नशे तुम क्यों करा रहे हो हाँ लोगों को नशा करा रहे हो तुम लोग, ये क्या कहते हैं. अगर बात है this was more or less isolated to Amsterdam, तो उसके इर्द गिर्द के जो like essentially तौर पर लोग जो थे है ना, हाँ the scientists who were essentially were looking at this situation, they said that we have an ideal situation right here where we can see if needle exchange programs actually do affect क्या कहते हैं HIV infection rates in drug using populations या नहीं है ना. ठीक है And this was the origin of the Amsterdam cohort studies. ये 1981 में essentially तौर पर हुआ with the peak of essentially तौर पर Soviet repulsion और वो सारा जो opium production और सारा जो चल रहा होता था. That's how it सही essentially तौर पर affected Amsterdam, and this is how they responded. तो वो medical experts जो हैं वो essentially तौर पर सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग एक cohort study carry out करते हैं from this day in 1981 onwards, और हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे क्या कहते हैं कि दो modes of treatment को essentially तौर पर वो analyze करेंगे. One is needle exchange programs है ना, जिसके अंदर सही वो essentially तौर पर साफ needles provide करे लोगों को, और दूसरी चीज़ ये है opioid antagonist treatment जो है. Opioid antagonist treatment is essentially the opposite, like you have heroin now, which is like the hardcore drug, right? हाँ So instead of giving people the hardcore drug now, you give them a smaller, lower, a light core drug essentially. It works the same way as heroin does. It's called ठीक है methadone, है ना? So methadone operates in the same way that heroin does, but बात ये है उसके जो potential for abuse और साथ में जो है वो addictive quality rate जो है ना वो और जो dangerous उसका risk जो साथ में associated है वो बहुत कम हाँ होता है methadone के heroin के मुकाबले में, especially तौर पे when you know कि you have no idea what's in the heroin जो streets के ऊपर मिल रहा होता है हाँ ना. तो ये एक essentially तौर पे एक safe stream of drugs तुम provide कर रहे हो to the like populace yeah to drug users, and also then they are like less likely to inject themselves with actual bleach or something else. At the same time you know during the war on during the क्या कहते हैं Soviet repulsion जो अफगानिस्तान के अंदर चल रही है, opium production वहाँ पे maximum पे पहुंची हुई है, Amsterdam के अंदर ये cohort studies carry out हो रही हैं, और क्या कहते हैं एक फाइनल वो क्या कहते हैं नारकोटिक्स का जो है essentially तौर पर कमीशन जो है वो बैठता है. Richard Nixon comes out and declares an all-out war on drugs. है ना? Richard Nixon, he says in 1971, कि we are going to have the war on drugs. We're going to fight everyone who is peddling cocaine. We're going to fight everyone who's going to क्या कहते हैं abuse, who's going to peddle opium. We're going to fight everyone who's peddling cannabis. है ना? क्योंकि by that time जब वो 1918 वो 1912 के अंदर जब वो पहले बार ओपियम कॉन्फ्रेंस हुई थी, कैनबिस जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट हो चुका है विद स्केड्यूल 1 ड्रग्स. हाँ हेरोइन के बराबर ही हाँ कंसीडर होता उसको था एंड आगे से रिचर्ड निक्सन रेसिस्ट पीस ऑफ शिट है ना, ही इज लाइक कि क्या कहते हैं he also doesn't like the marijuana जो essentially तौर पर यूजेज जो है वो बहुत टाइटली टाइड है with हिंदूज, और साथ में जो है लैटिन अमेरिका के साथ ब्लैक बहुत कल्चर के साथ भी ब्लैक कल्चर के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइटली टाइड है.
एंड साथ में वो क्या कहते हैं कोकेन यूज जो है वो एसेंशियली तौर पर वो भी क्या कहते हैं ब्लैक कल्चर एंड हिस्पैनिक कल्चर के साथ बहुत डीपली टाइड है. तो being an exposure to and also lower income क्या कहते हैं low income high crime rate neighborhoods essentially तौर पर which is for other reasons than drugs है ना because of lack of economic opportunity और साथ में दूसरी चीज़ों की वजह से वो essentially तौर पर इन communities से बहुत deeply racistly तौर पर die हुई भी है. सही है. एंड प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो अनाउंस करता है 1971 में कॉन्क्रीट स्टेप्स जो है ना वो 1980 समथिंग में आना शुरू हो जाते हैं. 1973 in force होते हैं. Like it just comes in force in 1973. Now we all know how the war on drugs turned out, you know.